see the picture that how many or how much type of sensors we are using for the various purposes. These sensors are connected with the internet and they are accessing the information and uploading the information, and now they are being used actually the devices which we are calling as the smart devices. Now after it, the IoT is indicating an important point also, more things are being connected. So it means that as the platform or as the spectrum of IoT is increasing, we are able to connect more number of devices with each other. Right now, the current age where we are right now, it is the IOP. This is the Internet of People. The people are connecting with the people. But now the scenario is going to be changed. The things are connecting with the things. It may be the living things or it may be the non-living things. So now in a picture, you can see that your dressing room, your hospital, your coffee maker, your car, your computer, your other devices, smartphones, everything is connected with the internet and they are being used for the home and daily life devices. It may be the for the work of business and public infrastructure as well as for the health sector. Now it is another scenario which we have. You can see a human and that human is containing the sensors. The sensor in the hand, sensors in the legs, sensors in the heart, and we are receiving the information continuously. The word continuously is very important. The people are connecting with the things. So now these sensors are sending the informations and these informations are captured by the smartphone, and then the smartphone is uploading the information through the internet, and these informations are passing to the office, to the hospital, or to the other resources. And now the work starts from here. After getting such large amount of the information, these information are supposed to be analyzed. The importance which we have to understand where the research direction is going on. It is not important that we are collecting the data from the sensor. The important point is that how we are able to analyze the data. The important issue in this IoT is that whether we are able to drive some including comments, including information, or whether our machine is able to take some decisions which on the basis of information those are collecting from these sensor devices. So now these sensor devices are collecting the information from the various sources, and these informations are passing through the internet to the various location, and the works start from here for their analysis. The decision making policies, the extraction or retrieval of the information, the mining of the information, as well as how the hidden information are to be extracted from this large amount of the information. It is an important issue of the IoT. Now it is another scenario which you can see that how the things are widely interconnected, and it is including the complex and heterogeneous resources and networks. Those are interconnected through the IoT. So now things are connecting to things. So it is the age of the wireless sensor networks. These are the wireless, of course the wireless, and they are also the sensors, but I should add one more thing here. These sensors should be intelligent. The intelligence is the essential component nowadays for these wireless sensors, because these sensors are not supposed to just pass the information. They are supposed to do some kind of the analysis on this information before sending the information, because the requirement is the right information should send to the right place, to the right people in a right way. These words are also associated with the Internet of Things. So I repeat these words. The right information should send to the right people, to the right place, and in a right way. It means the right way means that that information which has been collected by this sensor should be secure in all means. They should be protected, and
the sensor should itself decide where that information has to be sent. So now I have used the word, these wireless sensors should also become intelligent. So now we can just see that what we required the extension of the existing infrastructure, the expansion of the bandwidth, and we have the enhancement in the technology. If we're talking about the extension, we can just analyze more nodes, more connections, and we require the change in the infrastructure. So we may have IP version 6. It is the anytime, any place plus anything. I have also used these words. It is man-to-man as well as this is IoT, and the expansion is that expansion means that we have to increase the broadband and the bandwidth and enhancement in terms of the smart networks, data centering and contain oriented networking, and the context aware system. The autonomous systems are required. From here, the debate of intelligent agent starts. So now if we have a context aware system, it means that whatever sensors we are using, these sensors should not only connected to the internet, but they should also behave in an autonomous manner as well as in a smart manner. So now we have the three-dimensional picture of the feature network, where we have any time connection, any place connection, and anything connection. So now you can just see on the move outdoor and indoor, night and daytime, and on the move outdoor indoor from the PC and or the PC, and it is also including between the PCs, human to human, human to things, and things to things. Okay, now it is the scenario of the world. Now you can just realize where we have and where we are moving. So now during 2008, the number of things those are interconnected with the internet exceeded the number of people on the earth. It is a wonderful statement which I have, and the source I have also mentioned in a slide. And now you can see in a 2020 current scenario, it is the age of COVID-19, and the more and more use of Internet of Things is here, the more and more enhancement of the online things. So now we have 50 billion devices are interconnected through the internet. So now this is a very large number. So now you can imagine that how much that large number is, and if all the devices are connected simultaneously, then the entire infrastructure will stop. It is a chaos in the internet if all the 50 billion devices are working simultaneously to connect the things with each other. So now it is the requirement of change the infrastructure as well as the devices and as well as the bandwidth. So now we can just include here extending the current internet and providing connection, communication, and internetworking between devices and physical objects or things is actually being referred as the IoT or Internet of Things. Or we can just say, in the other word, the technologies and solutions that enable integration of real-world data and services into the current information networking technologies are often described under the umbrella, and that umbrella is known as the IoT. So I have included all the words here. I have included the word integration of real world data. The real world data I have shown you in my first slide. And in second and third slide, I have shown you the services. So it is the integration of this big data and what we actually want from this big data. This is we are calling as the services. The integration of these things with current information networking is actually the IoT. So now, what should I learn about the IoT? So I should learn that where the business trends are going, what is the emerging technology of the IoT, and what are the growing IoT services and the application. These are the areas where we can focus in the discussion of IoT. So now it is a intelligence system which is working with the IoT for a more connected world. Now you can just see how the world is interconnected with each other with the concept of IoT, but I am not using only the
system. I have included a one extra term with the system, and that word is the intelligent. It is a true picture, the true statement if I say the IoT cannot be useful until the system which we are using are not intelligent. The IoT cannot be useful for the society if the devices which we are using through the IoT are smart. So if I'm using the word smart, it automatically includes the word intelligent. So now you can see the picture, and in the picture I have mentioned the various industry enterprises, businesses, and the real requirements services. It includes communication, retail, vehicles, industrial, and as well as medical science, where the IoT and the intelligence is work in an integration. So actually, it is not an age of data storage. It is the age of knowledge management. We cannot say that data is required. Data is available through the IoT devices. But the point is, what the knowledge we are able to extract from the data, it is important in the IoT. How that knowledge has to be used for decision making for larger enterprises, it is important in the IoT. So now whatever devices, appliances we are using in the IoT, we should able to take the decision after utilizing or after representation of the knowledge and by applying the various mechanism of inferencing the knowledge. So it is the trend of the IoT. This is called as the technology roadmap, which you can see that how that roadmap has been drawn. Okay. Now it is another scenario which I have, and now you can just see the market of the smart product with the emerging trends of IoT, and I have the information from 2011 to 2016, and the rupee and this amount is in the billions of dollars. And now you can see the smart security, smart transportation, smart education, all are being, how much they are being purchased and how much they are being sold. So now you can see the smart security is increasing in share. As I have already informed you, the right information should reach to the right place and the right to the right people in the right way. That right way ensure that whatever information, data, knowledge we are sharing, it should be in a secure way. This is why I have used the word smart security. The smart home is also having some share nowadays, and that share is also increasing. Right. It is the growth in internet connected devices by 2020. Now you can see that how much that bar has increased. So now it is increasing. It is internet connected devices in billions. So now how much that things is increasing. So now it is a global data generation through the IoT, and we have the information from the source which I have also mentioned here. Every day around 10 raised to 18 bytes of data are produced. And now question which we have in front of the scientists, how to utilize the data, how to find a useful knowledge, or how to make a knowledge management for the data. This is a very big question in front of us. But unfortunately, what is happening? The sensors those we have, or the devices those we have connected with the IoT, are emerging the data in any form. That data is mostly unstructured or semi-structured. 80% of the data which is emerging from social media is unstructured, and the point, because it includes test material, voices, songs, video, and it has the picture of files. The question is how to analyze that unstructured data. This is a very big question in front of us. We have so many tools for the analysis of data if the data is in a structured form. The point is how we will do the analysis if the data is in unstructured form. But it is quite true,
If we have a large amount of data, the human cannot handle, the human cannot analyze from it. So we require the support from the machine, and not only by the machine, we require the term, the machine intelligence for the analysis of this unstructured data. So we can also see the scenario how the data generated with the various sources, and it is being in the extra bytes per month. So now you can see how much this is the large device. Now it is the things which we have of about the IoT. Our tool is here that how the earth is appearing and how the plants, the clothes, the things are interconnected. It is the theory of convergence. Because we require so many things with the IoT, we require the allowed computing to keep this data on a centric place to store. I need the big data analysis. I need the ecosystem. I need the cognitive science. I need the interface. I need the NLP. I need so many technology which is integrated with the IoT. So I have used our convergence of everything. It is actually providing you the platform. The IoT is providing you the platform for convergence of technology, convergence of businesses and ecosystem, as well as convergence of people, application, things, data, devices, etc. So now it is the innovation accelerators. So now you can see here. So now it is the IoT actually open a door for the era of big data. So now the point is we have the sensor, social media, e-commerce, cell phone, GPS system all are the part of the IoT. The point is whatever data they are emerging, it has to be analyzed. Okay. So now it is actually the scenario that how I can find the useful information, the hidden pattern, or how I can able to do the decision making from this big data. It is actually the real truth or real picture of the IoT. As I already informed you about the various types of data which is emerging from the IoT. This is the structure, unstructured, and see that how what we can do with the unstructured data analysis. It is document clustering, topic detection, identity extraction, sentiment analysis, speaker identification, language identification, conversion of speeches, and the other things, including the face recognition or the image recognition or the target tracking of the robotics. So it means that all these things are interconnected, and they are also finding a way that we have to develop the method for the data analysis of the unstructured data. It is some tools those we are available for the structured data analysis, and I have highlighted the point here. The tool which commonly nowadays is using is the machine learning tool. So that tool is actually providing you the facility that how the computer is able to find the hidden patterns in the data to perform either for the pattern classification, pattern clustering, or for pattern mapping, or for prediction. It can include the decision tree method, neural network method, deep learning technology, support vector machine, regression method, the owner map, and the K-means algorithms. It is the picture of the structured data and the picture of the unstructured data. So now you can realize from this picture, it is very easy to analyze this type of the structured data and very hard or complicated to analyze such type of the unstructured data. So we have the so many techniques nowadays available in the platform of the learning analytics. It includes the statistical methods, AI method, machine learning method, data mining method, and other methods. These all the methods are using for the data analysis. It means that they are all these methods are providing you the way how the machine is able to derive the hidden pattern or extraction of the information
from the large amount of the data which is emerging from the various sources of IoT. So now we have the recent age. This is the age of the machine learning, and this is the point which I've written here. Data analysis can be more efficient and effective if a machine can learn or the machine can think in this direction. So I have shown you the picture of some robots. So it is the 5 schools of the machine learning where we are nowadays exploring the ideas for the analysis, now which you can see symbolic statistics, evolutionary Bayesian network, and the analogies. Now after it, just the technology of the machine learning in the incorporation or in the integration of IoT as well as cloud computing. It is used by the AI, the deep learning, the machine learning, the natural language processing platform, and the other thing, including the speech recognition and the others. Now you can see how much industries are involved here. I have written also here the industries. It is the rethinking enterprises where we have the sales, security, and authentication, fraud detection, human resource recruiting, marketing, personal assistant, the intelligence tools, and these are the industries those are using these technologies. It is the rethinking industries where you can see that oil and gas, agriculture, media and content, consumer finance, and others. And how many companies are using here, including the Intel and also are included here. It is the rethinking human-computer interface where you can see that so many companies are using these things. It includes the robotics also. And it is the supporting technologies. It is included in the hardware, data preparation, and data collection. So now this is the integrated picture. All these things are interconnected and all the things are working with incorporation of IoT, machine intelligence, and the cloud computing. It is just a scenario actually what we want to do and in which way we are performing in the direction of the big platform. So here we have the knowledge. It is the source of information through the IoT. So we have the data collection, and here we have the pre-processing of this data by using the Hadoop and the other thing of data sciences, and it will call as the analytic platform. The second part which we have is the model generation and the Oracle models, and this model generation includes the machine learning technology. So we call this part as the learning part. And third part which you can see, it is called the intelligence part. So now all are integrated. As I have told you initially, the IoT is not a single technology. IoT is an integration of various technology where all these things are essential component of the IoT. So now we have cloud-based IoT big data application as a complete word. So now I have changed the word. Now it is cloud-based Internet of Things for big data applications. Now it is the other points which we required here in the IoT and cloud computing with the AI, that is the scalable, real-time, distributed and decentralized things, security and privacy. And apart from this, the important point which we have, which you can see here, it is the intelligent and the dynamic systems. As I have already told you, the knowledge management, the knowledge inferencing is the essential component for handling such a big situation of the big data. Right. So now it is just a theoretical or some idealistic concept which I feel is the more appropriate for this IoT. Nothing ever exists entirely alone. Everything is in relation to everything else. So it means that if you follow that word and if you realize the IoT,
then I can only say a one word with the IoT plus AOE plus allowed computing equals to the word without the walls. I repeat, if all the things are existing and the things are uh, existing, integrated, and they are expanding also, then we can say in a future world which we have or which may be or which we may have is the IoT plus cloud computing plus machine learning is equals to the world without the walls. It means that we will live in a world where there will be no wall. It means everything will be open to everybody. That is the point which we have in a sense of connection. So now this is the conclusion which I have. It is convergence is everywhere. Think on the how your business will emerge and scale up, need for more large scale IoT and big data testing and experimentation. In developed countries, majority people are living in city, whereas in developing countries still living in the rural areas. So we have to establish a connection between them. And the IoT and big data and allowed are the future of work. And I just include the last time it is the future of work, the world without the war. Okay, this is that. Thank you. If you have any query, then please you can ask me. If anyone is having any queries, so one can write in the chat box, as you may not be able to unmute yourself. So you can just write in the chat box. We'll wait for 2 minutes. So sir has very beautifully explained that in the field of IoT, there will be a lot of data requirements. So you can handle that data with using the machine learning techniques. And also you have to store the data. So for that reason, you just need cloud computing as well as big data analytics. So I hope all will get benefited with this lecture, and you may have some idea about how you can handle your data related to IoT. Using the machine learning techniques, and how you can store your data using some cloud computing techniques on the cloud. So thank you. So if there are any question you want to ask, so you can just write in the chat box, or else you can you can just send me your question later on. I will definitely send your query to sir. So if you have any. So sir, I think if there will be any query later on, so I will send it to you. Yes, sure. I will answer. I will reply. Yeah, thank you. So thank you very much, sir. Your lecture will be definitely benefit to all the participants. So thank you very much, sir. Thank you, sir. Amanji, may I leave the? Okay. Thank you very much. Thank you, sir. So all the dear participants, we are going to an end of this FDP, but we have as a we have a lecture on human values and ethics as a compulsory one, as per the guidelines of AICTE. So we have with us Professor Bhagwan Sharma, sir. So he has a PhD degree and DLED degree, and he's a retired professor of Hindi from St. John's PG College, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. So this lecture will be in Hindi, as sir is the professor of Hindi. So you may not, you may not have understanding of that, but definitely you will get some human values and ethics from this lecture. So I welcome you, sir, for in our FDP for your kind lecture. You welcome you, sir. मैं सभी प्रतिभागियों को और आयोजकों को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज शिक्षा में नैतिक मूल्यों का अभाव देखा जा रहा है। जब नैतिक मूल्यों का अभाव क्षरण शिक्षा में होगा तो निश्चित रूप से मानव मूल्य अपने आप में अपमानित होंगे। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए कुछ गुण अपनाने होंगे, और वो गुण है क्या है? शास्त्र कहता है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त लोके भुवि भार भूता
मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। मनुष्य बनने के लिए हमको अपने में तप होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, दया होनी चाहिए, परोपकार की वृत्ति होनी चाहिए। ये मानव मूल्य है। पहले स्कूलों में, कॉलेजों में हमने शिक्षा प्राप्त की तो प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में उसमें नैतिक शिक्षा का 1 घंटा हुआ करता था। प्रारंभ में प्रार्थना हुआ करती थी। मदन मोहन मालवीय जी ने जब इतने विशाल बीजीएचयू की स्थापना की तो उन्होंने प्रार्थना की और उस प्रार्थना का प्रतिदिन पाठन होता था। और वो प्रार्थना थी, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जा। जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जब इस प्रकार की प्रार्थनाएं स्कूल कॉलेजों में हुआ करती थी तो निश्चित रूप से मानव मूल्यों की स्थापना हुआ करती थी। हमारी संस्कृति में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। किसी के दुख की हमने कल्पना की, किसी को शत्रु माना ही नहीं, हमने तो सबको अपना मित्र माना और मित्रता का व्यवहार किया। भारतीय संस्कृति पर अनेक वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से अत्याचार होते रहे। 10वीं शताब्दी से विधिवत रूप से हमारे आक्रमण होते रहे, लेकिन हमारी संस्कृति की क्षमता थी, ये विशेषता थी कि इन आक्रमणों को, इन आत्याइयों के अत्याचारों को सहन करते हुए हमने अपने संस्कृति के रक्षण की परंपरा रखी। और अब विज्ञान का युग है। आज विज्ञान निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन विज्ञान, मेरा तो विनम्र निवेदन आप सब लोगों से ये है कि विज्ञान की प्रगति का भी लक्ष्य मानव का कल्याण होना चाहिए, मानव का शरण नहीं। आज पश्चिमी देशों में हथियारों की होड़ लगी हुई है, एक से एक आगे तेज ब्रिगेड से हथियार बना रहा है। ये हथियार मानव की रक्षा करेंगे या विनाश करेंगे, इस पर हमें चिंतन करना होगा। मित्रों, विज्ञान का धर्म, विज्ञान का आचरण मानव कल्याणकारी होना चाहिए, ना कि मानव को विनाश की ओर ले जाने पर। आज इस भौतिक युग में हम धन शास्त्र के प्रति बहुत आग्रह हुए। हमारी संस्कृति में कभी धन को विशेष महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ तो आपको बताता हूँ, ये चर्चा करती रही कि धन जो है केवल अपने आवश्यक होना चाहिए, अधिक धन जो है आपत्ति की जड़ होती है। छाया माया एक सी, बिरला जाने कोई, भागत के पाछे लगे, सन्मुख आधाबे सोए। ये माया बड़ी विचित्र चरित्र वाली है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण होता है उससे तो ये भागती है, और जो इसको दुत्कार देता है उसके पीछे पीछे चलती है। आप देख लेने, ऋषि मुनि हैं, सन्यासी हैं, जिन्होंने संसार से वैराग्य धारण कर लिया है, धन का उनके यहाँ कोई स्थान नहीं है। उनका तो उद्देश्य जीवन में परोपकार करना है, दूसरों का हित करना है। 18 पुराणे से व्यास से वचनम 2 है, 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन है, परोपकार है पुण्याय है, पापाय पर पीड़नम। जो परोपकार करता है वो पुण्य का भागी होता है, और जो दूसरों को सताता है, कष्ट देता है, वो पाप का भागी होता है। हमें अपने मानव जीवन में परोपकार की प्रवृत्ति रखना चाहिए। परोपकार करेंगे तो निश्चित रूप से संसार से विपत्तियां हट जाएंगी, दुख दर्द हट जाएंगे, आक्रमणवादी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। ऐसी प्रवृत्ति हमको अपनानी होगी। आज शिक्षा के जीवन में हमें नैतिक मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए। मित्रों, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हम जीवन में वो आचरण करें जिससे कि दूसरे को कष्ट न हो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हमको अच्छा नहीं लगता है उसका हमको दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाहते थे कोई हमारे गाल पे तमाचा मारे, तो हम दूसरे गाल पे तमाचा मारने के साहस क्यों पैदा करते हैं। हम नहीं चाहते कोई हमें गाली देवे, अपमानित करे, तो हम दूसरों को अपमानित करके दूसरे की संपत्ति को हड़पने की चेष्टा क्यों करते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है जीवन में, दूसरों के प्रति हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन का सिद्धांत वाक्य होना है।
मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारी संस्कृति सनातन है। सनातन का अर्थ होता है एवर लास्टिंग, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो सदैव विद्यमान रहती है। संसार में अनेक संस्कृतियां पैदा हुई, रोम है, मिस्र है, यूनान है, सब अपने अपने चरम पर पहुंची और अंत को प्राप्त हो गई। आज उनका केवल इतिहास में नाम है, लेकिन हमारी संस्कृति इतने अत्याचारों, इतने आक्रमणों, इतने आत्याई बलवों के बावजूद अपनी सत्ता आज बनाए हुए है और संसार को मार्गदर्शन है। आज संसार पुनः भारत की ओर टकटकी लगा कर देखे हुए है कि भारत हमें मार्गदर्शन करे हमेशा है। और ये तभी संभव है जब हम जीव कल्याण की बात करें, नैतिक मूल्यों की स्थापना करें, समाज सेवा में अग्रसर हों, तभी हम अपने जीवन में। हमारी संस्कृति में तो हमेशा चरित्र को प्रधानता दी गई। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति च अक्षेणो वित्ततः छेड़ वृत्तस्तु हतोत। इस श्लोक में दो शब्द आए हैं, एक है वृत्त, एक है वित्त। वृत्त का अर्थ होता है चरित्र और वित्त का अर्थ होता है धन। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्व रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः छेड़ो, धन के नष्ट होने पर कुछ नष्ट नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो होता, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो गया तो मानव का सर्वस्व नष्ट हो जाता। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, व्हाइल कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। ये हमारी संस्कृति रही है। मित्रों, धन जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं पूर्ति के लिए तो आवश्यक है, लेकिन धन ही सर्वस्व आज का मानव समझने लगा है, ये विपत्ति की जड़ है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है धन त्रिधा गति, धन की 3 गतियां होती हैं, दान है, भोग है, नाशस्य। धन की सर्वोत्तम गति है दान। जो व्यक्ति अपने जीवन में दान की प्रवृत्ति अपना लेता है, जो भी अर्जित करते हैं उसका 10 या 5 कुछ भी अपने भावना के अनुरूप दान करते रहते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं वह परिवार, वह संतति वर्षों तक आपको चलती रहेगी। और मैंने आगरे के 1000 परिवारों का मैंने आपको बताता हूं वो किया है, आकलन किया है, और उसमें देख लिया है कि 3री पीढ़ी में जो करोड़पति अरबपति थे, आज उनकी संतान है या तो भिखारी बन रही है, नौकरी कर रहे हैं। धन जब चंचल है, धन नश्वर है, नाशमान है, तो हमें धन के पीछे इतना नहीं। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि वृत्तम यत्ने, चरित्र की इतनी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि माया का जाल है, काजर की कोठरी है, काजर की कोठरी में केतु सयानो जाए, काजर की एक लीक लगे पे लगी है, नहीं बच सकता है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, नहीं कोई जन्म अस जग माही, प्रभुता पाह जाह मद नाही। इस संसार में कोई भी आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने किसी पद को सत्ता पर प्राप्त कर लिया हो, उसको अहंकार ना आया हो। ये अहंकार मानव के नाश का कारण बनता है, ये पतन का कारण बनता है। इसलिए हमारे जो शास्त्र है, हमारे ऋषि मुनियों के जो उपदेश हैं, उनके अनुसरण करते हुए अहंकार से हमें दूर रहना चाहिए। मित्रों, आपने तैत्रीय उपनिषद पढ़ा होगा। पहले भी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में दीक्षांत समारोह हुआ करते थे, और दीक्षांत समारोह का जो मुख्य अतिथि होता था वो छात्रों को ये दीक्षांत समारोह देता था। तो उसमें तैत्रीय उपनिषद का उदाहरण आता है, सत्यम बद धर्मम चर स्वाध्यान मा प्रभव, तुम्हें माता पिता तुम्हें आता है। पर अंत में देखिए आता है, आचार्य कहता है, यानी अनवद्यानि कार्याणि तानि त्वया सेवतानि नो इतनानि। हे प्रिय छात्रों, हम आपको आज उपदेश दे रहे हैं, और आपने अपने जीवन में जो जो अच्छी बातें देखी हों उनको तो जीवन में आचरण करना, और जो गलत बातें, हम भी मानव हैं, मनुष्य हैं, भूल इस भव में मनुष्य ही होती है, मानव का स्वभाव है भूल करना। यदि भूल हो जाती है, हम भी जीवन में कहीं भटक गए हों, तो उनके प्रति कभी ध्यान रखें। यानी अनवद्यानि कार्याणि, जो हमारे अनबद्ध दूषित गलत कार्य है, अनबद्ध पवित्र कार्य है,
तानी त्वया सेवतानी, उन्हीं का तुम्हें आचरण करना चाहिए। नोत्राणी, जो गलत कार्य हैं और गलत आचरण उनका नहीं करना चाहिए। ये गुरु शिष्य से कहता उपदेश देते हुए। मित्रों, हमको इन्हीं बातों पर चलना चाहिए। दान की भावना हमें बनाए रखनी चाहिए। दान से, दान की पूर्ण सदैव भरी रहती है। गिरधर कवि कहता है, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दान, दो हाथ लीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए, परमार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़े की याही वाणी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। हमें जीवन में सुचाल चलना चाहिए, कुचाल नहीं चलना चाहिए। और जो व्यक्ति सुचाल चलते हैं वो समाज में रोल मॉडल बनते हैं, वो आदर्श बनते हैं, उन्हीं का हम अनुसरण करते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। मित्रों, संसार में हजारों बादशाह, बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन आज तक उनको कोई याद नहीं करता है। संसार उन्हीं को याद करता है जो संसार को दे के जाते हैं। इसलिए दान प्रकृति का, प्रकृति धर्म है। दान प्रकृति का प्रकृति धर्म है। दान देना प्रकृति का स्वाभाविक धर्म। मनुष्य व्यर्थ ही डरता है। आखिर में तो हम सबको सब कुछ ही देना पड़ता है। मरते जाते, मरने समय हाथ से न बैंक बैलेंस जाता है, न कार हवाई जहाज संग जाता है। तो हमें दान प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। यही सच्चे मनुष्य को बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें दान भावना होगी, परोपकार भावना होगी। वह दूसरों के सुख की चिंता करेगा, दूसरों के दुख को हरने की चिंता करेगा। इसलिए हमारे संस्कृति में दान की बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ भी ये भी कहा गया, देखिए कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत, ये लाटानुप्रास का उदाहरण है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर सुपुत्र पैदा हो गया तुम्हारे, तो फिर भाई धन संचय की क्या आवश्यकता है। वो अपने सद्गुणों से धन, अपार धन पैदा कर लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और कपूत पैदा हो गया तो धन किसके लिए इकट्ठा करे हो, वो साल 2 साल में सब ठिकाने लगा देगा। मित्रों, हमारे यहाँ चरित्र की महिमा है, और चरित्र की महिमा नैतिक मूल्यों से आती है। और आज शिक्षा में इसी बात की आवश्यकता है। आज जो है आप देख रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो है आतंकवादियों से मिल रहे हैं, लोगों को अपमानित कर रहे हैं, लोगों को है निरीह लोगों को मार रहे हैं। ये इनका आज नैतिक मूल्यों का अभाव है। इंजीनियर डॉक्टर जरूर बन गए, विज्ञान की शिक्षा जरूर ग्रहण के लिए, लेकिन वो शिक्षा मानव हित में नहीं है, वो मानव को सताने में है। ऐसे शिक्षा से हमें बचना चाहिए। हमें जीवन में अच्छी शिक्षा को आगे चलिए। छाया माया एक सी, बिरला जाने कोई। ये माया छाया की तरह से है। आप जो आप चलते चलिए पीछे भागेगी, और आप उड़ जाएंगे तो ये खुद भाग जाएगी। इसलिए इससे हमें निवृत्त होना चाहिए। आप जीवन में केवल के 2 मार्ग बने, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग जो जीवन को वैराग्य की ओर ले जाता है। हमें संसार से कमल पत्र निर्लिप्त रहना चाहिए। जैसे कमल का पत्ता जल में तो रहता है लेकिन जल में डूबता नहीं है। उसी तरह माया मोह के जंजाल में हम संसार में रहते हैं, सांसारिक प्राणी हैं, सांसारिक अपेक्षाएं इच्छाएं होती हैं, उनका पालन करें, उसमें भी मर्यादा का पालन करें। मर्यादा विहीन होने पर हम मानव नहीं रहेंगे, हम दानव बन जाएंगे। मनुस्मृति में कहा गया है कि मानव का जन्म 2 बार होता है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। संस्कारात् द्विजुच्यते, और संस्कार से ही वह ध्वज मानव बनता, श्रेष्ठ मानव बनता है। एक तो माते गर्भ से जन्म ले लिया, फिर गुरुओं के संस्कार से संस्कारित हो गया, तब वो श्रेष्ठ मानव बनता है। और गुरु जब संस्कार देता है तो वो कहता है कि सत्यम पद, धर्मम चर्म, स्वाध्याय मां प्रमद, और कभी किसी को मत सताओ, परोपकार करो, जीवन में कल्याण। दूसरों को खुश रखोगे तो तुम
खुद सुखी रहोगे। ऐसी वृत्ति हमको अपनानी होगी। जब तक हम ये वृत्ति नहीं अपनाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम संकल्पना नहीं करेंगे, तो हम निश्चित रूप से दायित्व से अपने को वंचित करेंगे, दूसरों को ठगेंगे, दूसरों को धोखा देंगे। आज नैतिक मूल्यों की इस तरह शिक्षा के लिए आवश्यक बन गया है। नियामकों से हमारा अनुरोध है कि, और शिक्षक को देखिए जीवन भी हुआ करता है। शिक्षक भी स्वार्थ में नहीं रहता है, वो तो जीवन दान होता है। जीवन परंतु का लक्ष्य समाज का कल्याण करना होता है। आचार्यों ने गुरुओं की 4 प्रकार की परिभाषा की है। उसने कहा गुरु दीपक के तुल्य होता है। दूसरे विद्वानों ने कहा कि गुरु दीपक के तुल्य होता है, तो गुरु नहीं है, क्योंकि दीपक के तले में अंधेरा रहता है। वो गुरु कैसा है? जिसके तले में अंधेरा है, दोनों औरों को प्रकाश देता रहे। तो उन्होंने कहा फिर क्या होना चाहिए परिवार का? गुरु जो है चंदन बत होना चाहिए, चंदन के समान होना चाहिए। चंदन को काटिए तो महक से वो आनंदित कर देता है, लेकिन चंदन के दूसरे पेड़ों को, लेकिन दूसरे पेड़ों में ये क्षमता नहीं है बना सके। तो गुरु में ये क्षमता का अभाव है, तो गुरु को चंदन भी कहना गलत है। कुछ विद्वानों ने कहा तो पारस पत्थर की तरह, जैसे पारस लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है, लेकिन परिवर्तित हुआ सोना वो फिर सोना नहीं बना सकता है। गुरु में ये अभाव है, कमी है। गुरु तो भृंगी की तरह होना चाहिए। भृंगी कीड़ा होता है। विज्ञान के भी लोग जो जानते होंगे, इसमें केवल नर होता है, मादा नहीं होती है। तो इसका कैसे जन्म होता है? ये भृंगी कीड़ा जो झींगुर होता है, करके चारों तरफ घुन 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 करता रहता है और फिर उसको उसी में बना लेता है, वो भृंगी बन जाता है। इसी तरह गुरु का लक्ष्य भी जीवन पर्यंत अपने छात्रों के कल्याण, समाज का कल्याण, देश का कल्याण, संस्कृति का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण ये होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी शिक्षा का चरम उद्देश्य होना चाहिए। यदि ये चरम उद्देश्य होगा, विज्ञान में भी हम मानव हित की बात करेंगे, और ये तो निःशस्त्रीकरण से हम भागें, हथियारों की दौड़ से अपने को बचाएं और विज्ञान का प्रयोग मानव हित में करें। कैसा देश का दुर्भाग्य है, साल भर 1.5 साल अधिक हो गया, कोरोना ने पूरे विश्व को तमाम अंधकार में डूब दिया। मानव को दुश्मन समझता है। किसी समाप्त हो गई। हम किसी के पैर छूना पसंद नहीं करते हैं कि डर लगता है कोरोना चढ़ बैठेगा। हम किसी से हाथ मिला सकते हैं। अब आप देखिए, मानव मंदिर के पट बंद हो गए, भीड़ भाड़ से बचिए, ये करी सब संस्कृतियां विनष्ट हो रही हैं। ऐसी स्थिति में विज्ञान का धर्म ये होना चाहिए कि का कल्याण का रास्ता देखे और कोई न कोई ऐसा कोविड का विनाशकारी टीका जल्दी से आ जाए तो हम कम से कम सांस ले सकें और इस विवाद से बच सकें। मित्रों, मेरा यही आपसे संदेश है। कुछ त्रुटियां रही होंगी, भावावेश में कोई अधिक बोल गया हम, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि मित्रों, शिक्षा देते समय हमें नैतिक मूल्यों जरूर अपने जीवन में, बिना नैतिक मूल्यों के शिक्षा का कोई महत्व नहीं। अगर बिना नैतिक मूल्य की दी जाएगी शिक्षा, वो संसार को विनाश की ओर ले जाएगी और एक नाश हो जाएगा। रहेंगे संस्कृतियां कहाँ रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you very much, sir. Thank you very much for giving your thoughts on the human values and ethics. I hope all will get some knowledge from your lecture and they will try to implement those things in their real life. So thank you very much, sir. Thank you, sir. Thanks. So all the dear participants. तो भैया ऐसे कर दो बस। So this was the last session for today's talk. So one second. So yes, so we come to an end of the technical sessions of this FDP as well as some human values session.
So that was all the sessions of this FDP. Now we are having one more formality with us, as we have to take your assessment. So at correct 2 p.m., we will share the link of the assessment test to you. Okay. So through that link, you just have to submit your test by 3. Okay. And also there is one more request from you guys. You have to fill the feedback and attendance form for today, as well as you just have to give your feedback in words also. So you can just give your feedback through mail or on the WhatsApp group also. So you just have to give your feedback that overall session, how do you find that overall session was, overall FDP was good or up to your expectations or not. So you just have to share that point. So you can just give your feedback on the WhatsApp group or through email also. So the link of assessment test we will share by 2 onwards. So 2 to 3 you have 1 hour time to make your test. Okay, so there is a very simple test we have made for you. So there are only 10 questions on, and all are MCQ types. So definitely you will do the test in the 5 minutes or 10 minutes. So there will be no there will be no problem you will face in the test. So we have made the test that all of you get the minimum required mark for getting the certificate. So all the best, guys. So you just wait for 2 p.m. As 2 p.m. we will share the link for assessment, and as well I'm just now sharing the feedback link for today's session. And also I request you to kindly give an overall feedback through your email or through WhatsApp group in words. Okay. So thank you very much, all the participants. If you have any query or any doubt, so you can ask. If you have anything to clear, or you want to share something, so you can please. If you have any query or any doubt, you can just share in the chat box. Okay. So thank you very much, guys. I'm signing off. It was a nice cooperation from all of you. You have attended all the sessions and you give your valuable feedback to us. I'm thankful to all the participants. You will definitely get PPTs as soon as I get the PPTs from all the eminent speakers. One thing I can do in between, I will just share all the recordings with you, as you will get the content as well as the speech by the speaker. So I will just create a Google Drive link. So I'll put all these recordings in the Google Drive, and I will definitely share the link with you by today or tomorrow. Okay. So
Till then, you can manage with that. And as soon as I get the PPTs from speakers, so I will definitely share with you. Okay. So, any other thing you want to ask or you want to share? So you can please go ahead. So there is one request, as I told you earlier, you just kindly share your feedback on the group or on the WhatsApp, the overall feedback about this FBP. You just have to share that. We will be more than happy for that if you share. Okay, so thank you very much, guys. Thank you very much for your nice cooperation.